Hello, good morning everyone. I'm audible. Okay, so we'll start with today's lecture. So I hope you remember what we have done yesterday. Let's take a revision quickly. I hope screen is visible to you. Yes or no? Okay. So can anybody tell me what do you mean by a robot? Simple robot. Yes. Yes, student, tell me what do you mean by a robot? A machine which work on our command. Yes, very good. Uh, ek- let's see. See, I'm taking this revision. Maybe some of the students are not present in yesterday's lecture, so they can quickly. So what is robot? हम लोगों ने देखा था रोबोट क्या होता है, मल्टी फंक्शनल रीप्रोग्रामेबल ऑटोमेटिक इंडस्ट्रियल मशीन, जिसका काम क्या होता है, ह्यूमन का डिफिकल्ट जो वर्क है उसको रिप्लेस करने का या उसको कम करने के लिए. ओके. रोबोट को कैसे गाइड कर सकते हैं, बाय एक्सटर्नल कमांड और विद कमांड मे बी एम्बेडेड विद इन, मतलब जैसे मैंने आपको बताया था उसके पास कुछ स्पेशल पावर्स भी रहते हैं और वो एक्सप्लिसिट कमांड पे भी वर्क करता है और खुद के कमांड पे भी. और ऐसे रोबोट्स को हम लोग ऑटोनोमस रोबोट बोलते हैं. रोबोट्स को यूज क्यों करते हैं, जैसे मैंने आप लोगों को बताया था, ताकि ऐसे प्लेसेस जहाँ पर ह्यूमंस को डेंजर है या रिस्क है या सेफ नहीं है, जैसे हिल्स हिल्स हो गए या अंडर वाटर हो गया या कोई डर्टी प्लेसेस है, तो ऐसी जगह पे हमको अगर वहाँ का इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना है तो जहाँ पे हम रोबोट्स को इजीली भेज सकते हैं एज कम्पेयर टू ह्यूमन. उसके बाद मैंने आपको एक वीडियो शो किया था कि कैसे हम रोबोट्स को से वैसे बिगर टास्क के लिए नहीं, हम डे टू डे लाइफ के लिए भी यूज कर सकते हैं, जैसे किचन हो गया, होम हो गया, मेडिकल हो गया. देन हमने एक स्पेसिफिक रीजन डेफिनेशन देखा था रोबोट का क्या होता है. इज एन ऑटोनमस सिस्टम which exist in physical world, can sense its environment and can act on it to achieve some goals. ओके. एक ऑटोनोमस सिस्टम का मतलब मैंने आपको बताया था जब वो खुद से डिसीजंस लेता है. ओके. देन नेक्स्ट है कैसे हम लोग यूज कर सकते हैं रोबोट्स को डे टू डे लाइफ में, एक ऑटोमेटिक मशीन पेपर की तरह, स्पेस में, माइंस रिमूव करने के लिए, डिफेंस में, या एक छोटे बच्चे की आप कार को भी एक एग्जांपल दे सकते हो. एसेंशियल कैरेक्टरिस्टिक्स हम लोगों ने देखे थे, जिसमें फर्स्ट वन देखा था हम लोगों ने सेंसिंग. सेंसिंग क्या होता है, जैसे एक ह्यूमन बीइंग के पास कुछ सेंसर्स रहते हैं अपना जो भी इन्वायरमेंट है सेंस करने के लिए, वैसे ही रोबोट्स के पास भी कुछ सेंसर्स होते हैं ताकि वो अपना इन्वायरमेंट इजीली सेंस कर सके और वहाँ का जो भी इंफॉर्मेशन है कलेक्ट कर सके. जैसे हम लोगों ने लाइट सेंसर, टच सेंसर, हियरिंग सेंसर, हम इसके बारे में आगे देखने वाले हैं. देन हम लोगों ने देखा था टाइप्स ऑफ रोबोट्स, जिसमें हम लोगों ने मोबाइल रोबोट्स देखा था जो कि एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे इजीली मूव कर सकते हैं. इंडस्ट्रियल रोबोट जिनका काम है जैसे वेल्डिंग, मटेरियल हैंडलिंग, बड़े बड़े इंडस्ट्री में यूज करते हैं. डोमेस्टिक और हाउस होल्ड जो कि हम लोग होम के लिए यूज करते हैं, जैसे क्लीनर, पूल क्लीनर, स्वीपर. देन नेक्स्ट इज मेडिकल रोबोट. मेडिकल रोबोट कौन से रोबोट होते हैं जिनका काम हम मेडिकल फील्ड में करते हैं, लाइक मेडिसिन प्रोवाइड करना या ड्यूरिंग ऑपरेशन डॉक्टर को असिस्ट करना. या एग्जांपल सर्जरी रोबोट, सर्विस रोबोट जो कि किसी स्पेस रिलेटेड या कोई सर्विस रिलेटेड रहता है. एंड मिलिट्री रोबोट जैसे मैंने आपको बताया था, बॉम्ब डिस्पोजल होता है, माइंस रिमूवल होता है, या डिफरेंट ट्रांसपोर्टेशन रोबोट. So these are basically industrial robot. Next is mobile. This is household. This is medical. And this is military. And I hope you all are clear with this. Next हम लोगों ने देखा था again कुछ types of robots देखे थे. Students are joining. स्टेशनरी रोबोट कौन से रोबोट होते हैं स्टूडेंट, वो रोबोट जो कि एक ही प्लेस पे फिक्स रहते हैं और अपने सिर्फ आर्म का यूज करके टास्क को
कंप्लीट करते हैं। मतलब वो एक पोजीशन से दूसरे पोजीशन पे मूव नहीं हो सकते हैं, सिर्फ यूजिंग आर्म्स वो लोग अपना जो भी टास्क है वो परफॉर्म करते हैं। नेक्स्ट हम लोगों ने देखा था मोबाइल रोबोट। मोबाइल रोबोट में हम लोगों ने क्या देखा था कि एक ऐसी मशीन होती है जो कि किससे कंट्रोल होती है, एक सॉफ्टवेयर से, जिसके पास कुछ सेंसर्स रहते हैं और कुछ टेक्नोलॉजीज रहती है, लाइक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और एलिमेंट्स का कॉम्बिनेशन, और ये इजीली एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे मूव हो सकते हैं। नेक्स्ट हमने देखा था एनिमल रोबोट, जिनका टोटल स्ट्रक्चर रहता है एनिमल्स लाइक, उनको हम बोलते हैं एनिमल रोबोट। नेक्स्ट वन इज लेग्ड रोबोट। लेग्ड रोबोट आप देख रहे हो कैसे होगा। लेग्ड रोबोट क्या होता है, ये भी एक टाइप ऑफ मोबाइल रोबोट रहते हैं। टाइप ऑफ मोबाइल रोबोट क्यों बोल रहे हैं स्टूडेंट, क्योंकि ये भी एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे जा सकते हैं। बस मोबाइल रोबोट में क्या होता है, आपके पास नंबर ऑफ ऑप्शंस रहते हैं, आप लोग व्हील्स का, ट्रैक्स का यूज कर सकते हो, लेकिन लेग रोबोट में आप लोग सिर्फ लेग का ही यूज कर सकते हो। नेक्स्ट हम लोगों ने देखा था ऑटोनोमस रोबोट। ऑटोनोमस रोबोट क्या होता है, autonomous robots are in autonomous robots are intelligent machines capable of performing tasks in the world by themselves without explicit human control। जैसे मैंने आपको बताया था, उनको कोई भी ह्यूमन कंट्रोल की जरूरत नहीं होती, वो लोग अपने जो भी डिसीजन है, जो भी अपना टास्क है, वो अपने बेस पर कंप्लीट करते हैं। इंडियन कंपनी ने ऐसे दो रोबोट डेवलप किए थे, जिसका नाम था ब्रावो एंड मित्रा। देन हम लोगों ने देखा था एक्ट्रॉयड रोबोट। एक्ट्रॉयड रोबोट क्या होता है, स्ट्रक्चर टोटली लाइक अ ह्यूमन बीइंग, जिनका स्ट्रक्चर टोटली एक ह्यूमन बीइंग की तरह रहता है, उनको हम बोलते हैं एक्ट्रॉयड रोबोट। उसके हम लोगों ने देखा था हिस्ट्री ऑफ रोबोटिक्स। हिस्ट्री ऑफ रोबोटिक्स मतलब हम लोगों का जो फर्स्ट रोबोट है वो कौन सा था और उसे कैसे डेवलप किया था। सो द फर्स्ट रोबोट इज टिपिकली कंसिडर्ड टू बी डब्ल्यू ग्रे वॉल्टर टॉर्टोइस इन 1940, जो कि हमारे डेफिनेशन पे बेस्ड था। उसका हम लोगों ने एक इमेज भी देखा था कि हमारा जो फर्स्ट रोबोट था वो कैसे दिखता था। इसमें 3 व्हील्स थे जो कि ट्राईसाइकिल डिजाइन में अलाइन थे। जो फ्रंट व्हील है वो ड्राइविंग के लिए, स्टीयरिंग के लिए यूज होता है, बैक के जो 2 है वो ड्राइविंग के लिए यूज होता है, और ये पूरा एक प्लास्टिक शेल से कवर रहता है। ओके, और इसको डेवलप किसने किया था, विलियम ग्रे वॉल्टर ने, जिसने इसको क्या नाम दिया था, मशीना स्पेकुलेट्रिक्स एंड मशीना डॉसिलिस। क्यों, जो मशीन थिंक कर सके और जिसको कुछ टॉट किया जा सके। क्या क्या कंटेन करके रखता था, 1 फोटो सेल, ताकि वो लाइट डिटेक्ट कर सके, बम सेंसर, ताकि वो अगर किसी ऑब्जेक्ट के कांटेक्ट में आ रहा है तो, नेक्स्ट रिचार्जेबल बैटरी, then 3 motors, one for each wheel. Why? Because there are 3 wheels present. Okay. One analog electronic circuit using 2 vacuum, जैसे जो भी ब्रेन और व्हील का जो कनेक्शन था उसके लिए। बिहेवियर एंड कैपेबिलिटीज हम लोगों ने देखा था, फाइंड द लाइट, हेड टूवर्ड द लाइट, बैक अवे फ्रॉम द लाइट, टर्न एंड पुश टू अवॉइड ऑब्स्टेकल, रिचार्ज बैटरी। ये सब उसके बिहेवियर थे, जो कि हमारा फर्स्ट रोबोट था। उसके बाद हम लोगों ने देखा था बेसिकली हमारा रोबोटिक्स का डेफिनेशन क्या होता है। तो रोबोटिक्स क्या होता है, इट इज अ ब्रांच ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। इट इज मेनली कंपोज्ड ऑफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग, ताकि हम उसको इजिली कंस्ट्रक्ट कर सके, डिजाइन कर सके, डिफरेंट एप्लीकेशन ऑफ रोबोट्स। ओके, सो इट इज अ साइंस ऑफ बिल्डिंग और डिजाइनिंग एंड एप्लीकेशन ऑफ रोबोट्स। देन लास्ट हम लोगों ने देखा था उसके कुछ लॉज हैं। तो देर आर 3 लॉज। व्हाट इज फर्स्ट लॉ, अ रोबोट कैन नॉट इंज्योर अ ह्यूमन बीइंग, मतलब कोई भी रोबोट किसी ह्यूमन बीइंग को इंज्योर नहीं कर सकता। सेकेंड लॉ क्या था, अ रोबोट शुड फॉलो द ऑर्डर्स गिवन बाय इट्स ह्यूमन बीइंग, जो भी उसको कंट्रोल कर रहा है, अगर कोई उसको ह्यूमन कंट्रोल कर रहा है तो उसको उसके ऑर्डर्स को प्रॉपरली फॉलो करना है। एंड द थर्ड वन, व्हाट इज थर्ड लॉ, a robot is allowed to protect its own existence as long as protection would not conflict with a higher order law। मीन्स एक ह्यूमन के साथ साथ उसको खुद की एक्सटेंशन को भी उतना ही प्रोटेक्ट रखना है, ना ही उसको किसी ह्यूमन को हर्ट करना है, और ना ही किसी ऑब्स्टेकल के साथ उसको कांटेक्ट में आना है। आई होप दिस मच इज क्लियर टू यू। यस और नो, इज देयर एनी डाउट स्टूडेंट? This much we have done in yesterday's lecture.
So if you have any doubt, you can ask here only. So after that, we can move ahead. So shall we move ahead then? Okay. So next topic is Valentino Breitenberg's vehicles. What is it exactly mean? So वैलेंटिनो ब्रेटनबर्ग एक साइंटिस्ट का नाम था जिसने एक बुक लिखा था जिसका नाम उसने क्या दिया था, व्हीकल्स, इन 1984। हमारा जो फर्स्ट रोबोट है वो 1940 में डेवलप हुआ था, और जो कि विलियम ग्रे वॉल्टर ने किया था। सेकंड, एक ऐसे ही साइंटिस्ट ने एक बुक रोट की थी जिसका नाम था व्हीकल्स, जो कि किया था 1984 में। इस बुक में क्या था एक्चुअली, book describes a series of ideas that show how one can design simple robot and get them to produce behavior that appear very animal like and lifelike। मीन्स इस बुक में क्या था, आइडियाज थे, ओनली आइडियाज थे कि कैसे हम एक सिंपल रोबोट को डेवलप कर सकते हैं ताकि वो एनिमल खिलाए या ह्यूमन बीइंग की तरह बिहेव कर सके। Bratenberg himself did not actually build any of the robots or vehicles। उसने खुद ने कोई भी रोबोट को डेवलप नहीं किया था, जस्ट दे सिंपल आइडियाज दिए थे। Bratenberg's vehicles was having single light sensor, motors and very interesting connection between them। ओके, तो उसके जो आइडियाज थे उसमें क्या था, सिर्फ दो ही चीजों का मेन रोल था, वो था एक लाइट सेंसर और एक मोटर, और उनके बीच में कनेक्शंस, तो वो हम आगे देखेंगे। तो फर्स्ट टॉपिक क्या है, वैलेंटिनो ब्रेटनबर्ग एक साइंटिस्ट था जिसने क्या किया था, एक बुक लिखी थी जो 1984 में, जिसमें कुछ आइडियाज डिस्क्राइब्स किए थे कि कैसे हम एक रोबोट को डेवलप कर सकते हैं ताकि वो एनिमल और एक ह्यूमन बीइंग की तरह बिहेव कर सके। आर यू क्लियर विद दिस? डू यू हैव एनी डाउट? ओके, तो बेसिकली वो जो बिहेवियर था ना, वो कैसे वर्क किया करता था, वो इस स्लाइड पे है। सो फॉर 2 minutes जस्ट रीड दिस स्लाइड एंड देन आई विल एक्सप्लेन दिस। फॉर जस्ट 2 minutes जस्ट रीड दिस। Yes, you can rejoin, no issue. So done. Should I explain this? ओके, सो हम लोगों ने देखा एक बुक था जिसके पास कुछ आइडियाज थे। उस आइडियाज में एक कनेक्शन दिखाया था लाइट सेंसर एंड मोटर्स के बीच में। तो लेट्स सी
The sensor were directly connected to the motors so that the sensory input could drive the motor output. This mean जो हम लोगों ने सेंसर यूज किए थे उसको हमने एक मोटर्स के साथ प्रॉपरली कनेक्ट किया था। जब भी हम कोई इनपुट सेंसर पे देते थे हमको वो जो आउटपुट था वो मोटर पे दिखता था। फॉर एग्जाम्पल अ लाइट सेंसर could be connected directly to the wheels। जो हमारा हमने जैसे अभी देखा एक रोबोट था, फर्स्ट रोबोट हम लोगों ने देखा उसमें एक व्हील भी था। वैसे ही हम जो लाइट सेंसर है उसको व्हील के साथ कनेक्ट कर सकते हैं। सो द स्ट्रोंगर द लाइट द फास्टर द रोबोट मोड। जैसे हम उस लाइट को स्ट्रॉन्ग करते थे वैसे ही वो रोबोट फास्ट मूव होता था। ऐसे कॉन्सेप्ट को हम क्या बोलते हैं, फोटोफिलिक, मतलब लविंग लाइट, मतलब वो लाइट उसको एक पॉजिटिव वे में दिख रही थी। नेक्स्ट, अगर ये नहीं तो हम इसका वाइस वर्सा भी कर सकते हैं। इन सम व्हीकल्स द कनेक्शन वाज इन्वर्टेड so that the stronger the light the slower the robot would move। That's called photophobic, afraid of light। See, नेक्स्ट ऑप्शन क्या था, जैसे ही हमने लाइट सेंसर को व्हील्स के साथ कनेक्ट किया है, जब भी हम उसको लाइट को स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं लेकिन जो वो रोबोट है ना वो स्लो मूव हो रहा है। क्यों स्लो मूव हो रहा है? क्योंकि वो जो लाइट वो डिटेक्ट कर रहा है वो एक नेगेटिव लाइट है। हम लोगों ने फर्स्ट रोबोट की कुछ कैपेबिलिटीज देखे थे जिसमें हम लोगों ने देखा था वो बैक अवे भी कर सकता है लाइट का। क्यों? जब भी उसको कोई लाइट पॉजिटिव नेगेटिव उसको सेंस होती है वो उसके अकॉर्डिंग मूव करता है। अगर उसको वो लाइट पॉजिटिव नहीं लग रही है तो वो वहां से अफ्रेड होता है, उसको हम बोलते हैं फोटोफोबिक। A connection between the sensor and motors is called an excitatory connection because the input excites the output। तो इसको excitatory connection क्यों बोलते हैं? क्योंकि जब जब हम लोग अपना इनपुट चेंज कर रहे हैं तब तब हमारा आउटपुट भी चेंज हो रहा है। मतलब जो हमारा आउटपुट है वो डायरेक्टली कनेक्टेड है हमारे इनपुट से। हैव यू अंडरस्टूड दिस स्लाइड स्टूडेंट? डू यू हैव एनी डाउट? Yes or no? Okay. Next, conversely, a connection in which the stronger the sensory input, the weaker the motor output is called an inhibitory connection। ऐसे ही जहां पर हम लाइट को स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं लेकिन जो मोटर है वो वीक मूव हो रहा है उसको हम बोलते हैं इनहिबिटरी कनेक्शन। बिकॉज द इनपुट इनहिबिट्स आउटपुट। इसका मतलब क्या है, जब हम इनपुट को स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं ना तो हमारा जो आउटपुट है वो हमें डिक्रीज हो रहा है। इस कनेक्शन को हम बोलते हैं इनहिबिटरी कनेक्शन। ओके। Breitenberg's book describes how much simple mechanism can be employed to store information, build a memory, and even achieve robot learning। और इस बुक में क्या डिस्क्राइब किया था कि कैसे हम एक सिंपल मैकेनिज्म का यूज करके कैसे हम डेटा को स्टोर कर सकते हैं या कैसे हम मेमोरी बिल्ड कर सकते हैं रिगार्डिंग रोबोट्स। जो भी हमारे आइडियाज रहते हैं, जो जो कॉन्सेप्ट हमें चाहिए वो सारे इस बुक में डिस्क्राइब किए थे। So I hope you are clear with this. Yes or no? If you have any doubt, student, you can ask, or else I'll move ahead. Okay. Next one is artificial intelligence. Uh, so just read this slide and can anybody tell me, according to you, what do you mean by artificial intelligence? Just read for 2 minutes, 1 minute.
ओके डन, let's start. So, what is artificial intelligence? The field of artificial intelligence was officially born in 1956 at a conference held at Dartmouth University in Hanover, New Hampshire. तो ये जो artificial intelligence था स्टूडेंट, जब रोबोट डेवलप हुआ था वो टाइम पे artificial intelligence डेवलप नहीं हुआ था. यू कैन सी, जो फर्स्ट रोबोट था वो 1940 में आया था, लेकिन जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का कॉन्सेप्ट है वो हम लोगों ने 1956 में लाया था. ओके. द गोल ऑफ मीटिंग वॉज टू डिस्कस क्रिएटिंग इंटेलिजेंस इन मशीन्स. अब ये क्यों क्रिएट किया था? सी, जो हमारा फर्स्ट रोबोट था वो रोबोट कैसा था, उसको एक ह्यूमन कंट्रोल कर रहा था, लाइक उसको एक एक्सप्लिसिट कंट्रोल मिल रहा था. बट ये जो मीटिंग थी इसमें ये डिस्कस हुआ था कि कैसे एक रोबोट या एक मशीन के अंदर हम खुद का इंटेलिजेंस क्रिएट कर सकते हैं ताकि वो खुद से अपने डिसीजंस ले सके. फॉर machines to be intelligent they will have to do some heavy duty, and to do that they will need to use the following. अभी एक मशीन को तुम इंटेलिजेंस कैसे कह सकते हो? तो उसको कुछ टास्क परफॉर्म करने होते हैं. तो वो टास्क क्या है? इंटरनल मॉडल्स ऑफ द वर्ल्ड. उसको, मतलब एक मशीन को अगर एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे जाना है तो उसको पूरे वर्ल्ड का एक मॉडल प्रिपेयर होना चाहिए या याद होना चाहिए कि मुझे किस प्लेस पे क्या हिस्से जाना है, क्या रूट है एंड ऑल. सर्च थ्रू पॉसिबल सॉल्यूशंस. इफ सम एरर और सिर्फ प्रॉब्लम इज अराइजिंग, तो सिर्फ एक ही सोल्यूशन प्रोवाइड नहीं करना चाहिए. देयर शुड बी मोर देन वन सोल्यूशन. प्लानिंग एंड रीजनिंग टू सॉल्व प्रॉब्लम. अगर कोई प्रॉब्लम अराइज हो रही है तो वो कैसे सॉल्व की जा सकती है और हमने कौन सा कॉन्सेप्ट यूज किया है और क्यों यूज किया है, उसका रीजन वहां पे प्रिपेयर होना चाहिए. सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ इंफॉर्मेशन. सी, जब भी हम कोई ऐसे कॉन्सेप्ट या ऐसा कुछ डेवलप करते हैं, सो बेसिकली हम लोग उसको नॉर्मल लैंग्वेज में नहीं देख करते हैं. वाई? क्योंकि फिर उसको कोई भी एक्सेस कर सकता है. इसलिए हम लोग को अपना जो भी इंफॉर्मेशन है ना उसको कोड करके रखते हैं, ताकि जो भी उसमें इन्वॉल्व है सिर्फ वो लोग ही उस मैसेज को अंडरस्टूड कर सके, ना कि आउटसाइड वर्ल्ड पर्सन कोई भी. हायरार्किकल सिस्टम ऑर्गेनाइजेशन. हायरार्किकल सिस्टम ऑर्गेनाइजेशन मींस कैसे हम एक सिस्टम प्रोसेस करने वाले हैं वो स्टेप बाय स्टेप अरेंज होना चाहिए. सीक्वेंशियल प्रोग्राम एग्जीक्यूशन. सीक्वेंशियल प्रोग्राम एग्जीक्यूशन मीन्स जो भी हम एग्जीक्यूट करने जा रहे हैं वो एक सीक्वेंस में होगा, मीन्स हम लोग स्टेप बाय स्टेप उसको एग्जीक्यूट करेंगे. आर यू क्लियर स्टूडेंट? तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या होता है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का मतलब यह है कि कैसे हम एक मशीन को इंटेलिजेंट डिक्लेयर करें, कैसे वो खुद से डिसाइड करे और कैसे वो खुद के टास्क परफॉर्म करे, ना कि कोई ह्यूमन कंट्रोल या एक्सप्लिसिट कंट्रोल की हेल्प ले. आर यू क्लियर विद दिस? इफ यू हैव एनी डाउट. Yes, do you have any doubt? Okay. So shall I move ahead? Till here, if you have any doubt, student, or if you have any problem regarding robotics, you can tell me frankly. There is no issue. Okay. After course completion, don't tell me. So if you have any issue, yeah, if you want something else extra, you can tell me right now. Okay. Okay. सो नेक्स्ट, डिफरेंस इन रोबोट सिस्टम एंड अदर एआई प्रोग्राम. तो इसमें क्या डिफरेंस है? कैसे हम अलग एआई प्रोग्राम्स को, जरूरी नहीं है कि हम सिर्फ रोबोटिक्स में यूज कर रहे हैं, हम अलग अलग प्लेसेस से भी कर सकते हैं. तो कैसे हम एआई प्रोग्राम्स को अलग जगह यूज कर रहे हैं और कैसे रोबोट्स में यूज कर रहे हैं, उसका कुछ डिफरेंस है. तो फर्स्ट वन इज एआई प्रोग्राम्स.
दे यूजुअली ऑपरेट इन कंप्यूटर स्टिमुलेटेड वर्ल्ड। अगर हम एआई प्रोग्राम को कहीं और यूज कर रहे हैं तो मोस्टली हम लोगों उन लोगों को ना कंप्यूटर्स में यूज करते हैं, लाइक कोडिंग वगैरह करते हैं। रोबोट्स दे ऑपरेट इन रियल फिजिकल वर्ल्ड। यस यू नो, रोबोट्स का हम यूज ही क्यों कर रहे हैं, ताकि उनका फिजिकल एक्सिस्टेंस होता है, ना कि वो किसी कंप्यूटर के थ्रू होता है। वो एक फिजिकल एक्सिस्ट होता है, जैसे एक ह्यूमन बीइंग एग्जिस्ट करता है वैसे ही रोबोट भी एक्सिस्ट करते हैं। The input to an AI program is in symbols and rules। जब भी हम थ्रू कंप्यूटर या थ्रू लैपटॉप कोई कुछ भी परफॉर्म करते हैं तो कैसे करते हैं, कुछ सिंबल्स होते हैं, कुछ रूल्स होते हैं। सपोज मैं एक चार्ट बना रही हूँ, उसमें मैंने अलग अलग सिंबल यूज कर रहे हैं, तो वो क्या है सिंबल, उसको डिस्क्राइब करना पड़ता है। क्या रूल्स हैं वो हमको पहले दिखाना पड़ता है। इनपुट्स टू रोबोट इज एनालॉग सिग्नल इन द फॉर्म ऑफ स्पीच, वेवफॉर्म और इमेजेस। बट जब हम एक रोबोट को कंट्रोल कर रहे हैं स्टूडेंट, तो उसके जो इनपुट होते हैं ना वो एक सिग्नल के थ्रू होते हैं। या तो वो सिग्नल हो सकते हैं, या वो स्पीच हो सकता है, या कोई भी इमेज हो सकता है, ताकि वो रोबोट उसको इजिली अंडरस्टैंड कर सके और उसके अकॉर्डिंग अपना जो भी वर्क है वो स्टार्ट कर सके। दे नीड जर्नल पर्पस कंप्यूटर्स टू ऑपरेट ऑन। जर्नल पर्पस क्या होता है स्टूडेंट, दो टाइप का कोडिंग प्रोग्रामिंग होता है। एक होता है जर्नल पर्पस और एक होता है स्पेसिफिक पर्पस। जर्नल पर्पस का मतलब क्या होता है कि हम लोग किसी भी प्रोग्रामिंग या किसी भी फील्ड में उसको यूज कर सकते हैं। बट स्पेसिफिक टास्क का मतलब क्या होता है कि आपने उसको किसी स्पेसिफिक चीज के लिए ही डेवलप किया है। सपोज अगर मैंने रोबोट्स में कुछ यूज कर रही हूँ, दैट मीन्स वो एक स्पेसिफिक टास्क हो गया। यस और नो? क्यों? क्योंकि हम लोग वो सिर्फ रोबोट्स के लिए यूज कर रहे हैं। पर जनरल पर्पस क्या होता है कि हम किसी भी फील्ड में उसको इजिली यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट इज, in robots they need special hardware with sensor and effectors obviously। ये robots आप देखे होंगे वो एक फिजिकल एलिमेंट्स का भी यूज करता है, जहां पर उसको अलग अलग सेंसर एंड इफेक्टर्स का यूज होता है। व्हाट डू यू मीन बाय इफेक्टर्स, वो हम लोग अभी आगे के लेक्चर्स में देखेंगे। टिल हियर आर यू क्लियर? यस और नो? ओके, सो नाउ I'll show you one video कि कैसे एक रोबोट बिल्ड किया जाता है। सो 5 minutes वीडियो इज देयर। मे बी देयर इज नो वॉइस, बट डोंट वरी, देयर इज नथिंग। जो भी है आपको एक वीडियो में देख कर ही समझ जाएगा। तो आई प्ले नाउ, जस्ट वेट अ सेकेंड। तो आपको वीडियो वाला स्क्रीन विजिबल है स्टूडेंट? ओके, सो आई स्टार्ट।
Yes. So have you seen the video? सो आई होप यू आप लोगों ने देखा होगा कि कैसे हम लोग उसमें अलग अलग कंपोनेंट्स का यूज कर रहे हैं, लाइक हार्डवेयर कंपोनेंट का यूज कर रहे हैं, लाइक सर्वो मोटर्स थे, डीसी मोटर्स थे, अलग अलग कंपोनेंट थे, आर्डिनो था। एंड दीज ऑल थिंग्स आर, सर्वो मोटर्स क्या होता है, डीसी मोटर्स क्या होता है, वो हम लोग आगे के लेक्चर्स में देखने वाले हैं। बट हैव यू सीन कि कैसे हम लोग कंपोनेंट्स एंड प्रोग्रामिंग का यूज करके उसका उसको कंबाइन करके रोबोट्स को डेवलप करते हैं? यस और नो? ये जो वीडियो था वो एक स्मॉल रोबोट्स को डिस्क्राइब करने के लिए था कि कैसे आप छोटे रोबोट्स को डेवलप कर सकते हैं। उसमें आप लोगों ने लास्ट में देखा था एक ऑटोनोमस रोबोट भी था। ऑटोनोमस रोबोट का मतलब जैसे मैंने आपको बताया कि वो खुद के डिसीजंस लेता है, खुद से टास्क परफॉर्म करना करता है। तो हैव यू क्लियर टिल हियर स्टूडेंट? यहाँ तक सबको सब कुछ क्लियर है? इज देयर एनी डाउट? यू कैन टेल। ओके। सो नेक्स्ट अब हम लोग देखेंगे कि एक्चुअली में रोबोट्स क्या होता है, व्हाट्स इन अ रोबोट। मतलब कि रोबोट का हमको पता है एक स्ट्रक्चर। अब वो रोबोट क्या क्या कंटेन करता है, वो रोबोट वर्क कैसे करता है, मीन्स उसके क्या कंपोनेंट्स हैं। लाइक अगर हम लोग अपना ह्यूमन बीइंग देखें, हम लोग कैसे वर्क करते हैं, यूजिंग आर्म्स, यूजिंग लेग्स, यूजिंग ब्रेन। सेंस कैसे करते हैं, यूजिंग आई, नी, ईयर्स, नोज। वैसे ही ये जो रोबोट होते हैं इनका हमको फिजिकल स्ट्रक्चर पता है, लेकिन वो फिजिकल स्ट्रक्चर में भी तो कोई कंपोनेंट्स होंगे, कोई सेंसर्स होंगे। तो वो क्या होता है वो हम देखेंगे रोबोट कंपोनेंट में। तो तो रोबोट कंपोनेंट, तो रोबोट कंपोनेंट्स क्या है? द रोबोट्स मेन कंपोनेंट आर अ फिजिकल बॉडी, सो इट कैन एक्सिस्ट एंड डू वर्क इन द फिजिकल वर्ल्ड। जैसे हम लोगों ने बताया उसका एक फिजिकल बॉडी तो होता ही है जो कि एग्जिस्ट करता है और जो भी अपना फिजिकल वर्ल्ड में टास्क परफॉर्म करता है। सेंसर, जैसे हम बॉडी ह्यूमन बीइंग का एक स्ट्रक्चर होता है, एक फिजिकल बॉडी होता है, ऐसे रोबोट का होता है। नेक्स्ट सेंसर। सेंसर जैसे हम लोग इजीली सेंस कर सकते हैं। कैसे सेंस कर सकते हैं? जैसे मैंने आपको बताया, यूजिंग आईज, ईयर्स, नोज। वैसे ही कुछ सेंसर्स रोबोट्स के पास भी प्रेजेंट रहते हैं जिनका यूज करके वो अपना एनवायरनमेंट को इजीली सेंस कर सकता है। इफेक्टर्स एंड एक्टिवेटर्स, सो इट कैन टेक एक्शन। जैसे हम ह्यूमन बीइंग के पास स्टूडेंट आर्म्स होता है, लेग्स होता है, फिंगर्स होता है, वैसे ही रोबोट्स के पास इफेक्टर्स एंड एक्टिवेटर्स रहता है ताकि वो एक्शंस ले सके। सपोज मैंने उनको, आई विल गिव अ सिग्नल, यू हैव टू मूव फ्रॉम हियर टू देयर, बट फॉर मूविंग दे नीड लेग्स और व्हील्स। सो उसको हम बोलते हैं इफेक्टर्स एंड एक्टिवेटर्स। अ कंट्रोलर, सो इट कैन बी ऑटोनोमस। अभी ये लास्ट पॉइंट ऑटोनोमस, जैसे मैंने आपको बताया, जो कि खुद के डिसीजंस लेता है। क्लियर? सो रोबोट कंपोनेंट्स क्या होता है, क्लियर है? जिसमें हम लोग चार मेन कंपोनेंट्स देखने वाले हैं वन बाय वन इन अ डिटेल। जिसमें फर्स्ट वन होता है हमारा फिजिकल बॉडी, सेकंड वन होता है सेंसर्स, नेक्स्ट होता है इफेक्टर्स एंड एक्ट्यूएटर्स, एंड फोर्थ वन कंट्रोलर। या तो उसे बाहर से कोई कंट्रोल करता है या फिर वो ऑटोनॉमस है, वो खुद को कंट्रोल करता है। ओके, क्लियर है? सो फर्स्ट वन इज एम्बॉयडमेंट। एम्बॉयडमेंट मतलब फिजिकल बॉडी। ओके, जस्ट जस्ट टेक अ लुक स्टूडेंट for 2 minutes.
Hello, I'm audible. Okay, so there is one announcement, student. After some time, I'm going to share one Google form. Listen me very carefully, student. First listen me, and then you have to अपलोड इट. आपको अभी मैं एक गूगल फॉर्म भेजूंगी जिसमें आपको अपने डिटेल्स एंटर करने हैं. डिटेल सेंटर में आपको क्या क्या करना है, जिस फॉर्मेट में आपको आपके डिटेल्स पूछे हैं, लाइक सरनेम, लास्ट नेम, मिडिल नेम, वॉट एवर इज इट, आपको उसी फॉर्मेट में अपना डिटेल्स एंटर करना है. सपोज किसी ने अगर रॉन्ग लिया है तो हम लोग उसको रिमूव कर देंगे. सो आई होप यू आर क्लियर कि आपको अगर फर्स्ट आपका सरनेम पूछा है तो सरनेम, देन मिडिल नेम पूछा है मिडिल नेम, देन लास्ट नेम पूछा है तो लास्ट नेम. बीच में आप स्पेस दे सकते हो, बट कोई अंडरस्कोर, कोई सिंबल यूज नहीं कर सकते, ओनली स्पेस यूज कर सकते हो. सेकेंड थिंग, जो आप जहां आपका रोल नंबर पूछा है स्टूडेंट, अभी आप लोग ध्यान से सुनो, रोल नंबर में आपको क्या एंटर करना है. जो हमने आपको इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज के रोल नंबर दिए थे वो आपको एंटर नहीं करने हैं. जो आपको आपके डिपार्टमेंटल रोल नंबर है, जो अभी तक आप यूज करते थे, सपोज आपको 1 है, 2 है, 3 है, 4, वॉट एवर, आपको वही रोल नंबर एंटर करना है. इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज के ग्रुप पे जो रोल नंबर शीट आया था वो वाला एंटर नहीं करना है. आई एम रिपीटिंग अगेन स्टूडेंट, क्या करना है आपको. फर्स्ट ऑफ ऑल, जिस फॉर्मेट में आपका नेम पूछा है आपको उसी फॉर्मेट में आपका नेम देना है. सेकंड, रोल नंबर में आपको आपका डिपार्टमेंटल वाला देना है. अब उस रोल नंबर के आगे आप अपना नेम वगैरह कुछ नहीं लिखोगे. अगर 1 है तो 1, 2 है तो 2, बट उसके आगे कुछ स्पेसिफाई नहीं करोगे. थर्ड थिंग, आपकी जो भी स्ट्रीम है, लाइक FI BSc IT, FI BSc CS, FI BSc BCom, तो वो आपको वो क्लास मेंशन करनी है. ओके, एज इट इज. सपोज यू आर फ्रॉम IT, तो FI BSc IT. इफ यू आर फ्रॉम CS, तो यू हैव टू एंटर FI BSc कंप्यूटर साइंस. ऐसा एंटर करना है. फोर्थ वन, एक ड्रॉप डाउन लिस्ट होगा जिसमें आपको पूछा होगा नंबर ऑफ असाइनमेंट टिल डेट. टिल डेट मतलब अभी तक आपको 2 असाइनमेंट दिए हैं, तो आपको वहां पे सिलेक्ट करना है कि आपने कितना असाइनमेंट सबमिट किया है. सपोज अगर आपने एक भी असाइनमेंट नहीं किया है तो आप वहां पे 0 सिलेक्ट करोगे. अगर आपने एक असाइनमेंट सबमिट किया है तो आप 1 करोगे, और अगर आपने 2 असाइनमेंट सबमिट किया है तो आप वहां पे 2 सिलेक्ट करोगे. ओके, मिनिमम 4 में से आपको 3 तो सबमिट करना ही है, उसके बाद ही आपको सर्टिफिकेट मिलेगा. क्लियर है? मेरे ये जो 4 पॉइंट्स थे, क्लियर है स्टूडेंट? अगर आप लोग गलत इंफॉर्मेशन, SY BSc CS, नॉट SY BSc कंप्यूटर साइंस. ओके, SY BSc CS, इट शुड नॉट बी SY BSc कंप्यूटर साइंस. तो मेरा फर्स्ट क्या था, जिस फॉर्मेट में आपको नेम पूछा है, जैसे आप लोग कोई भी फॉर्म भरते तो आपको रहता है ना सर नेम, मिडिल नेम, लास्ट नेम, उसी फॉर्मेट में आपको आपका नेम प्रोवाइड करना है. रोल नंबर जो आपको डिपार्टमेंटल रोल नंबर है, मीन्स जो आपके आईडी कार्ड पे रोल नंबर है आपको क्लास में मिला है, वो यूज करना है, ना कि इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज वाला यूज करना है. थर्ड थिंग, क्लास आपको कैसे प्रोवाइड करना है अपना स्ट्रीम. सपोज यू आर फ्रॉम FY कंप्यूटर साइंस, तो आपको क्या लिखना है, FY BSc CS. एंड द फोर्थ वन, आपको असाइनमेंट, अभी तक 2 असाइनमेंट दिए थे, तो आपको जितने भी आपने सबमिट किया है उतना आपको सिलेक्ट करना है. अगर आपने कोई नहीं किया है तो आपको 0 करना है, 1 किया है तो 1, 2 किया है तो 2, और मिनिमम 3 तो करो तो ही आपको सर्टिफिकेट मिलेगा. क्लियर? इज देयर एनी डाउट? तो अभी पूछो. अगर फॉर्म में डिटेल्स डालते समय कुछ मिस्टेक किया तो वो नहीं काउंट होगा. क्लियर? तो आफ्टर 5 to 10 minutes I'll give you break. At that time I'm going to share that Google form with you all. Okay, मैं आपको चैट बॉक्स में उसका लिंक प्रोवाइड करूंगी, डोंट वरी.
रोल नंबर जो आपका डिपार्टमेंट है, जैसे आपका रोल नंबर 35 है तो आप 35 यूज करोगे। ओन रोल नंबर के फील्ड में सिर्फ रोल नंबर ही डालना। सपोज योर रोल नंबर इज 35, देन यूज 35 ओनली। आज के फॉर्म पे आपको 3 नहीं सबमिट करना है। आज के उसमें अगर आपको अभी तक 2 ही असाइनमेंट मिले हैं, तो अगर आपने दोनों सबमिट किए हैं तो आप वहां पे क्या यूज करोगे? 2 सिलेक्ट करोगे। Okay, so I hope you are clear with what are the different components in robot. There are 4 components that I tell you. So, so first one is embodiment. Having a body is the first requirement for being a robot. It allows the robot to do things. Okay, first one, कोई भी robot हो या कोई भी human being को उसका first need क्या है? एक physical body exist करती है. Okay, having a body is the first requirement for being a robot. Embodiment refers to having a physical body. It is necessary for a robot, but it has a price. It has a price means it has some rules. An embodied robot must obey the some सेम फिजिकल मतलब कुछ फिजिकल लॉस उसको परफॉर्म करने पड़ेंगे अगर वो एक रोबोट है। इट कांट बी इन मोर देन वन प्लेस एट अ टाइम। एक टाइम पे वो एक से ज्यादा प्लेस पे नहीं प्रेजेंट रह सकता है। इट कांट चेंज शेप एंड साइज आर्बिट्रली, मतलब वो टाइम टू टाइम अपना शेप एंड साइज को इमीडिएट चेंज नहीं कर सकता है। इट मस्ट यूज द इफेक्टर्स ऑन इट बॉडी टू एक्टिवली मूव इटसेल्फ अराउंड। उसको इफेक्टर्स का यूज करना है ताकि वो एक प्लेस से दूसरे प्लेस या अपना जो भी आर्म्स फिंगर्स है उसको मूव कर सके। इट नीड सम सोर्स ऑफ एनर्जी। यस ऑफ कोर्स, ये हमने कल ही देखा था कि उसको कुछ बैटरीज पावर्स का ही लगता है। इट टेक्स सम टाइम टू स्पीड अप एंड स्लो डाउन। इट मूवमेंट अफेक्ट्स हिज एनवायरनमेंट इन वेरियस फेज। मींस अगर वो एक प्लेस से दूसरे प्लेस मूव हो रहा है तो वो कैसे एनवायरनमेंट को अफेक्ट कर रहा है। इट कैन नॉट बी इनविजिबल। रोबोट है डजंट मीन कि वो इनविजिबल रहे, इट शुड बी विजिबल। So here are some rules. Having a body is the first requirement. So this is our first component. Next, all physical robots have to worry about not running into or hitting other things in their environment. Avoid collisions. जैसे मैंने आपको ये कल ही बताया था, रोबोटिक्स के लॉ में ना ही वो कोई हिट करना चाहिए, ना ही किसी ह्यूमन बीइंग को, ना ही कोई ऑब्स्टेकल को। एवरी बॉडी हैज इट्स लिमिटेशन। फॉर एग्जाम्पल, शेप ऑफ द रोबोट्स बॉडी डिसाइड्स हाउ इट कैन इंटरेक्ट विद अदर रोबोट्स। मतलब कुछ लिमिटेशंस है, मतलब एक शेप से पता चलता है कि डिसाइड करना होता है कि वो कैसे अदर रोबोट्स के साथ, या कार है या कोई स्टफ है या कोई पीपल है उसके साथ कैसे इंटरेक्ट करेगा। It has often been said that faster robots look smarter. That's another example of how the robot's embodiment influences its image. Okay, so ये एक पॉइंट देखा गया है कि जो फास्टर रोबोट्स होता है उसको ज्यादा स्मार्टर माना जाता है। So I hope first component, that is physical body, is clear to you. Yes or no? Is there any doubt? We'll tell you about exams later on. आपको एग्जाम का डेट उसमें टाइम टेबल में दिया है। नेक्स्ट वन इज सेंसिंग। फर्स्ट हमारा क्या रिक्वायरमेंट है? फिजिकल बॉडी। सेकंड हमारा क्या रिक्वायरमेंट है? सेंसर। सो जस्ट हैव अ लुक स्टूडेंट फॉर 2 minutes. Just read it.
Yes, done. Okay. So student, here I'll give you a break of 15 minutes. I'll share a link with you all. That is Google Form. Just wait. Should know that how you can go for the writing programs into the this one. Okay, so if you want to do that, what you can do, what you have to do, you want to find out the factorial of a number. Okay, so if you want to find out the factorial of a particular number, like if I want to find out the factorial of a number 5. Okay, so if you want to find out the factorial of a number 5, how you will find it out? How you find the factorial of number 5? 5 into 4 into 3 into 2 into 1. Yeah, either you can write down in this way, or you can write down like 1 into 2 into 3 into 4 into 5. Just a second, just. Yes, Bhumika, lectures are already recorded. I mean, recorded lectures are already sent. Okay. As you know that 9 to 12 lecture is there. So this go in single meeting, correct? So entire आपका जो कल का recording रहेगा ना, in that you will get the entire thing for the R programming also and for the robotics also. So I had word with the Neelam ma'am and she has told that she has uploaded all the things. Even I think our notes also she has uploaded. Yes? Yes, Bhumika, you got it? Okay, okay. Okay. So you every day's recordings are uploaded. So in that single recording, you will get everything. Okay. So like here, what you are doing, you can find out the factorial of 5. You can find out the factorial of 5, like 5 into 4 into 3 into 2 into 1, or you can find it out like 1 into 2 into 3 into 4 into 5. Yes. Uh, okay, so when you are finding this factorial, why I have taken the example of factorial, because I want to introduce the concept of loop to you. Okay, so what is basically loop concept? I hope you know that what is the meaning of loop. If you want to execute the same statement again and again, then you can use the loop statement. Like here, what you are doing, you are doing the multiplication. Yes, first you are going to multiply 5 into 4, then whatever result will be there, that is going to multiply by 3. Yes, so it will be like कैसे होगा आपका uh, first you are finding 5 into 4. Okay, then 5 into 4 का जो result होगा 20, that is going to be multiplied by 3. Okay, then you will get 60, and then that is going to be multiplied by 2. Yes, then you will get 120, that is going to multiply by 1. Then the final result you will get by 120. Same way here, if you want to do, so how you can do, you can multiply 1 into 2 first, which you will get 2. Then what you can do, you can multiply 2 into 3, where you will get the 6. Yes, then you can 6 is going to be multiplied by 4, which you will get 24, and then 24 is going to be multiplied by 5, which will get the 120. Yes, so both the way you can find out the factorial. Yes, so here what you can see, this multiplication is getting repeated. Yes, the same operation is getting repeated. So whenever if you want to perform the same operation again and again, or you can say more than one time, then you can use the concept of the loop.
Okay, so that is basically loop. You know that there is basically two types of statement which is very important in any programming language. One is a conditional statement, hmm, another is a loop statement. Just a second. Yes, so what we will do, conditional statement and another is nothing but a loop statement. Yes, so there is basically these two statements are there. One is a conditional statement and another is nothing but a loop statement. So when you are talking about the conditional statement, what it does, it will execute one statement only once. Okay, so there will be two part, one will be true and another will be false. Okay, so here basically what happened, either you will execute for the true or you will execute for the false. Yes, but the statement will be executed only once. Barabar? So for example, if I am writing if I less than 10, then you are doing a particular operation, print I or print A. Okay? Else what I am writing is print B. Okay, so what it means that you are checking one condition. Okay, if it is true then it will be executed, if this condition is false then this will be executed, but at a time only one statement will be executed, either print A or a print B, not both. Yes, so that is known as a conditional statement. While what happen in case of loop statement, you will execute the same thing more than once. Like if I'm using a loop for I is equal to 0, I less than 3, I plus plus. Okay? And if I'm writing print A. Okay, so this statement print A is going to be, how many times it is going to be executed? It is going to be executed 3 times. So the same statement, that is a print A, is going to be executed 3 times. Is it clear? Yes. So that is the difference between the loop and the conditional statement. So in conditional statement, one statement will be executed only once, while in loop statement, it will be executed more than once. Is it clear? Yes. So at least the funda of loop statement and conditional statement is clear to everyone. Anybody have a doubt? See, practically we will see, but at least it is clear to you that how the, what is the difference between the loop statement and the this one. Okay, 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 very good. Now I will just show you. Just a minute. Okay. हम्म, अपने को UGC approve दीजिए. Okay. So when you are starting with this, how you will start? So first I will show you that how to use the loop statement, and then I will let you know that how you can continue with that. Okay. So first we will see that how to use the loop. So when you are using the loop, there are basically two types of loop. One is a for loop and another is a while loop. So first I will let you know about this. This if else is so clear everyone, it is simple one. We will use in some programming, then you will understand. In a loop, basically there are basic type is a for loop and while loop. These two are the basic loop type. What happen in a for loop? For loop is basically used with the list, that you understand. It basically is used with loop, a list.
Okay, while the while loop you can use anywhere. What do you mean by basic this one? See, I will show you the structure of while and for loop. For loop कैसे जाता है? For I, okay, like if I'm writing for I in 1 comma 2 comma 3 comma 4 comma 5. So what it means, it will check the values of I, whether it is in this particular list, that is 1 2 3 4 5. अगर वो इस list में है, then only it will check it. Okay, तो मतलब क्या होता है, ये जो for loop होता है, it will only work for the range of values. Okay, or you can use the same way as a for I in, you can specify the range 1 colon 5. So इसका मतलब क्या होता है कि for I will be, if the I का value is between 1 to 5, so it will execute the things. Is it clear? So here basically what happened in case of this, what happened, that you have to specify it, basically work for the range of value, and it basically you can use it for the list value. Okay, so for example I will just show you over here itself. For example, if I'm using for, if I'm specifying I in, if I'm specifying the value as a 1 colon 5, matlab in a range of 1 and 5, and what I'm doing over here, I am printing I. Okay, so if I will print the value of I, okay, so if we are using this particular one, and if I'm just executing this one, so after for, in case of R, you just use the bracket so that it specifies that it is getting executed for this one. Okay, so for I, you can see that in range of 1 and 5, it is not compulsory to give the space. Without space also it will work. And now if I will execute it, see how many times it has been printed? 1 2 3 4 5. If I will write down I 1 to 10, means this execute, it will execute from 1 to 10. Yes, so this basically work for a particular range. You can say that it basically work for the particular range. You have to specify the particular range or list. Now how you will use for the list? For example, if I'm saying for, okay, if I'm specifying the particular value, that it list of value, that it will work only for those list of value. Okay, so for, if I'm specifying that, so first I have to create the list. Okay, so for example, if I'm creating a list as a weekdays. Okay, so if I'm creating a weekdays list, what will come in that? So whenever you want to create any particular list in a R, you have to use the function C. जब भी आप लिस्ट क्रिएट करते हो तो आपको फंक्शन कौन सा यूज करना है? सी. ओके, सो वीकडेज आपके बेसिकली क्या होंगे? मंडे, ठीक है, देन string values are always specified in a single quotes. I hope you know that. Tuesday, single quotes or a double quotes. Wednesday, Thursday, Friday, and Saturday. Okay, so this week, no, sorry, weekdays is only till the Friday. Okay, so if you are specifying this, you have created this, and now if you want to check in this particular range, so what I will do, I will check whether the values in this particular range or not. Okay, so what I will do, for, I will take a variable day in weekdays. Okay, so if it is in within these weekdays, then I will print the day. Okay, now if I will
Yes, so what it is displaying? Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday. Anything else it is displaying? No. Because what we have given, I have given that for day in this particular list. So ये list में जितने भी days हैं, that is going to be executed. Yes, so this is basically loop where it is executed, the same statement is executed more than once. जैसे इसमें I कितने बार execute होगा? 10 times. डे कितने बार एग्जीक्यूट होगा? जितने डेज हैं इसमें, लाइक मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, जितने डेज है उतने टाइम्स वो एग्जीक्यूट होगा. सो दिस इज बेसिकली कॉल्ड एज अ लूप. ओके, now the next we will see how the while loop will work. So what happen in case of while loop? In case of while loop you have to use while and you have to specify the condition. जैसे आपको कितनी बार एग्जीक्यूट करना है? 10 टाइम्स. तो आप क्या करोगे? while I is less than 10. Okay, so you will specify while I is less than 10, that many time it should be executed. Okay, so you will do while I is less than 10. Okay, then you have to write down the code, how my whatever you want to execute. Like here I want to write down any particular one, so it will be executed. Now here what will happen if I will just run this one? See, are you able to get any particular output? No. Why you are not able to get any particular output? Because what you have mentioned while I is less than 10. See, जब हम लोग for loop use करते हैं, what we have mentioned for I in range of 1 to 10. तो हम लोग ने क्या किया? I का starting value mention किया, that is 1, और वो कहाँ तक execute होगा? 10 तक. ठीक है? So we are mentioning the range value, that is the initial value, that is 1, and the ending value, that is a 10. But here we have just mentioned the condition that I should be less than 10. But I का initial value हम लोगों ने mention किया क्या? नहीं. So first you have to mention the initial value as I equal to 1. Okay, so you will mention it as an initial value as I equal to 1. Now when you will execute it again, see, it is executing indefinitely. How many? अभी तक ये stop ही नहीं हुआ है. It get on executing. Yes. Okay. So why this is happening? क्यों हो रहा है ये? Because मैंने I का वैल्यू क्या इनिशियलाइज किया? मैंने 1. अब वो while loop में जाएगा, वो क्या चेक करेगा? 1 is less than 10. Yes. And it go on executing this one. बिकॉज मेरा आई का वैल्यू कहीं चेंज ही नहीं हो रहा है. मेरा आई का वैल्यू क्या रह रहा है? 1 ही रह रहा है. एंड 1 इज ऑलवेज गोइंग टू बी लेस देन 10. yes, so I am not changing this I value inside the loop. So it is very important that whatever value you are specifying the condition, that value should be changed inside the while loop, else it will go on executing the loop, because this statement is always going to be true. 1 is always going to be less than 10. So what I have to write down? I have to write down I equal to I plus 1. Okay, and now I will execute this. See, अभी वो इसमें ही है. I have to interrupt. So you can interrupt from here. यहाँ पे red color का symbol था. By using that you can interrupt. Now I will just run it. So अभी वो कितने times print हुआ? 10 times. If you want to be more specific, then you can just execute the value as a I. So you will understand that how many times it is print. Is it clear? So it is taking 1, and I had mentioned less than 10, so it will be executed 9 times. So it is very important to change the value of this variable in a loop, else it will go to the indefinite loop. So this is basically how you are using the loop and loop statement. Is it clear to everyone? Loop statement is clear to everyone, or anybody have any problem?
Uh, what is your doubt? Loop statement respite, ma'am. What it means? Conditional statement is similar to while loop. No, while loop is not similar to the conditional statement. See, I will give you the example of the conditional statement also. It is not same. They are loop statement. I told you that in conditional statement, one statement will be executed only once. While here, in this, your statement is executing more than once. Okay, so it is not same. I will tell you that also. मैम फर्स्ट कंपोनेंट में इनपुट डालते हैं, सेकंड कंपोनेंट में आउटपुट, फोर्थ कंपोनेंट में ग्राफ. व्हाट यू मीन टू आस्क? सॉरी, आई एम नॉट गेटिंग योर क्वेश्चन. Okay, here can we write I plus plus? See what happen if you will write the I plus plus. It is giving error. Yes, because the pre-increment and post-increment operator is not supported by the R. R as well as Python both does not support this plus plus and minus minus, that is a pre-increment, post-increment, and pre-increment and post-increment decrement operators are not supported by the R. Okay. Okay, so this is how your loop statement work. Now we will come to the if statement. See, if I am saying if I am initializing the value of k, I am taking a variable, I am initializing the value of k as a 10. Okay, and here if I am checking if k is less than 10, then I am saying that print a. Okay, else I am saying print b. Okay, so you have taken a value k, okay, but you have initialized as a 10. So what it is saying that if the value of k is less than 10, then you have to print a. If the value of k is greater than 10, then you have to write down the. Okay, so that is a different thing. It will execute only one statement at a time. ठीक है, so वो क्या कर रहा है, वो सिर्फ एक स्टेटमेंट ही एग्जीक्यूट कर रहा है एट अ टाइम. Okay, so as it is executing only one statement at a time, so it is different. It is not similar to your this one, that is loop statement. Okay, it is not similar to this one. You have to execute from here. Yes, so what it is printing, it is printing the value of b. Why? Because k का value मैंने क्या दिया है 10, and k is not less than 10. 10 is not less than 10. If I'm giving the k ka value 5, so k is going to be less than 10, then print a should be executed. Unexpected else in a else. Just a minute. क्या क्या? Just a minute. So it will print a. Unexpected else. Why it is giving this error?
Okay, so as soon as you are ending with the if, immediately start with the else it will show that error. Okay, so here what you are getting, you were getting a, because k का वैल्यू हम लोग ने क्या इनिशियलाइज किया है 5, so it will execute a. So here you can see that at a time only one statement can be executed. You cannot execute both the statement, or you cannot execute more than one statement, while in loop statement you can execute more than one statement. So that is the main difference between the conditional statement and the loop statement. So conditional and loop statement can never be same. Okay, I hope your doubt is clear. Yes. So this is how you are going to work for the conditional and the for statement, loop statement. Now we were supposed to write the program for the factorial of a number. Okay. So what you have to do, you have to you have to find the factorial of a particular number. Okay. So first what you have to do, you have to read a particular number. So I will write down n and we will take it from the user. User से value कैसे लेते हैं? We are using the read line method. Okay. In read line method, what you are going to write down? You are going to write down enter number to find the factorial. Okay. So you will enter the number. Okay, once you are reading the number, now here, as yesterday if you remember, I told you that whenever you are reading a particular number, it is always in an integer format. Okay, like here it will ask for the entering the number. Okay, so you have to enter the number over here. Okay, so it's like it is always in a this format, so that you have to convert into the integer. Yes, so what you are going to write down, n equal to as dot, you have to specify integer, so that this number should be converted into the integer. Okay, now what I will do, हाँ बोलना, चाय आ रही है तो मैंने बोला बोलने के लिए कोई एग्जांपल चाय we, we can put conditional statement in loop. Yes, yes, you can put the conditional statement in loop. Yes, you can put it. I can give you one example, don't worry about it. Okay, so what you are going to do, n equal to as dot integer. Okay, so you have taken the number and you have converted into the integer. Once you have converted, now what, for example, if I am entering 5, so हम लोग को क्या करना है, 1 से start करके 5 तक जाना है. So we can use the for range over here. So what we will use, for I in 1 to n, बराबर, जो भी हम लोग ने n नंबर लिया है यूजर से वहां तक वो रन होना चाहिए. Then what you can write down inside that, for example, if I am taking a variable fact equal to 1, so हम लोग क्या करेंगे, उसको मल्टीप्लाई करते जाएंगे, बराबर. So fact equal to fact into I, बराबर. So what it will do, पहले i का वैल्यू क्या रहेगा 1. सो पहले फैक्ट का वैल्यू क्या है 1, सो 1 विल बी मल्टीप्लाई विथ 1, सो 1 into 1, बराबर. देन अभी फैक्ट का वैल्यू क्या हो गया 1, आई का वैल्यू नेक्स्ट लूप में क्या हो जाएगा 2. तो फैक्ट का वैल्यू क्या था 1, 1 into 2 इट विल बिकम 2. सो अभी फैक्ट का वैल्यू क्या हो गया मेरा 2. करेक्ट. सो मैं जब वापस लूप में जाऊंगी तो अभी आई का वैल्यू क्या हो जाएगा 3. सो 2 into 3 6. सो अभी फैक्ट का वैल्यू क्या हो गया 6 और आई का वैल्यू क्या हो गया 4. सो इट्स लाइक दैट, जैसे मैंने यहाँ पे मेंशन किया है फॉर लूप के लिए, वैसे ही वो मल्टीप्लाई करते जाएगा. ठीक है. once our multiplication is done, then what we can do, we can print fact, that is factorial of a number. ठीक है. so we can just write down over here print factorial of number is, you can print it as it is. So now if I will first, अभी जब भी when you use the read line, आपको क्या करना है, पहले आपको सिर्फ read line को execute करना पड़ेगा अकेले, so that you can get a number. So you will click over here, I will enter a number as a 5. Okay, now I will execute other things.
So factorial of 5 is nothing but a 120. Is it clear? If again I will run this one, I will run only this one first so that I can get the number. If I am entering 6, now if I will enter, and now I will run the in different part. So I am getting the factorial of 6 is 720. Is it clear? So like this you can use the for loop. अभी आप बोल रहे थे you can use the like if I am giving अभी हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग एक रेंज ऑफ नंबर ले रहे हैं, ठीक है. वी आर टेकिंग एनी रेंज ऑफ नंबर फॉर आई, सॉरी, वी आर टेकिंग एनी रेंज ऑफ नंबर फॉर आई इन. हम लोग को क्या करना है, वी वांट टू 1 to 20 के बीच में जितने भी इवन नंबर्स है वो प्रिंट करने हैं हमको, ठीक है. What is your problem statement? Between the range 1 to 20 you have to print all the values which are even numbers, मतलब which are divisible by 2. बराबर. यस. तो हम लोग क्या करेंगे, फॉर आई इन 1 to 20. तो आपका पहला लूप क्या हो जाएगा, क्योंकि आपको कितने कितने वैल्यूज के बीच का इवन नंबर चाहिए, 1 to 20 के बीच के जितने भी इवन नंबर्स है सब चाहिए, बराबर. तो आपको इसमें दोनों चीज यूज करना पड़ेगा, क्योंकि आपको कितनी बार एग्जीक्यूट करना है, 1 से लेके 20 तक सारे नंबर के लिए एग्जीक्यूट करना है. मतलब आपको यहाँ पे क्या यूज करना पड़ेगा, लूप यूज करना पड़ेगा. फिर उसके अंदर भी आपको जाके क्या यूज करना पड़ेगा, इफ यूज करना पड़ेगा, क्योंकि वो नंबर जो होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, 2 से डिवाइड होना चाहिए. So what we will write down, if I mod 2 equal to 0, अगर वो equal to 0 है, if mod is not supported then you can use the person. If I person 2 equal to 0, okay, तो आपको क्या करना है, प्रिंट, क्योंकि अगर वो डिवाइड हो रहा है मतलब वो क्या है, इवन नंबर है. सो प्रिंट आई, बराबर. So what you can write down over here, you can write down print list of even number in the range 1 to 20. 1 to 20. Okay, so you have to print all the numbers which are in the range 1 to 20. Okay, so यहाँ पे आपने क्या यूज किया, लूप भी यूज किया, एंड आपने क्या यूज किया, कंडीशन यूज किया. So you can use the loop condition, if a condition inside the loop. Okay, so you can use it. So here this person operator is not also supported, so what we can write down, we can directly use the function mod, and you can give the number like I को आपको किससे डिवाइड करना है, 2 से डिवाइड करना है. इफ mod I and 2 is 2, मतलब अगर ये वैल्यू डिवाइड हो रहा है, I 2 से डिवाइड हो रहा है, तो हम लोग को प्रिंट I करना है. ओके, सो नाउ आई विल एग्जीक्यूट इट. Could not find the function mod. Okay, let me check whether why it is not able to find out. Just give me a second. Okay, so I think it is mod is also not supported. So according to the R का ये it may changes.
So I can, there are only three options, either mod or person person. So you can try with all. If person 2 equal to 0, okay. So you are comparing if this value is going to be equal to 0, then it is going to be uh, even number, or it is going to be odd number. So you can just write down if I person 2 equal to 0, ठीक है. So अगर ये कंडीशन है आपका, one more bracket will come, ठीक है. So then here you are first using the for loop, then if loop. So there is only three options for checking it, either per modulo, or you can use the person, or you can use the double person. Yes. So you can see that it is giving the list of all the even numbers between the two 1 to 20. So 2, 4, 6, 8, 12. Yes. Is it clear? Yes, 06. I hope I solved your doubt that how you can use the if condition in a loop statement, in any loop statement. Yes. Anybody have any doubt whatever we have done today? Loop statement and this both are clear to everyone? Yes. Okay. Okay. So the so in today's session we are supposed to cover the topic of the loop statement and conditional statement, which is very important. Okay. Then in tomorrow's session we will there is, I think, tomorrow 9 to 11 lecture is there. So in tomorrow's session we will complete all other remaining things. Okay. So I hope this is the very important part of any programming language. Whatever programming language you are doing, you must know the for loop and conditional statement, because most of the logic is built on this one these statements only. Okay. So if you have any doubt, you can ask me. The recording sessions and everything you will get. Okay. So this all these things you will get uploaded after the end of the session. So now Pooja ma'am will continue with the robotics. Again, I'm asking, if you have any doubt whatever we have done today, you can ask me. Okay. Else you can go through the things and you can ask me tomorrow also, no issues. Okay. Okay, then bye bye everyone, take care. Just give me a 2 minutes, then ma'am will start. Okay. सो हम लोगों ने आफ्टर ब्रेक क्या देखा? फर्स्ट वन, लेट्स टेक अ रिवीजन. फर्स्ट वन हम लोगों ने देखा सेंसिंग. सेंसिंग क्या होती है? सेंसर्स आर फिजिकल डिवाइसेस दैट इनेबल अ रोबोट टू परसीव इट्स फिजिकल एनवायरनमेंट in order to get information about itself and surrounding. Means वो अपने खुद का स्टेट और सराउंडिंग का स्टेट जो परसीव करता है उसको हम बोलते हैं सेंसिंग. और उसके लिए हम लोग कुछ सेंसर्स का यूज करते हैं. सेंस क्या सेंस करना है ये डिपेंड करता है कि रोबोट का क्या टास्क है,
ओके। रोबोट को टू स्टेट होते हैं सेंसिंग के लिए, फर्स्ट वन इज एक्सटर्नल एंड द सेकंड वन इज इंटरनल। इंटरनल मतलब रोबोट का खुद का स्टेट, एंड एक्सटर्नल मतलब जो इन्वायरमेंट स्टेट रहता है। जैसे अगर रोबोट सेंस कर रहा है कि कोई प्लेस डार्क एंड बम्पी है, तो वो एक्सटर्नल स्टेट होगा। एंड अगर कोई उसका रिलेटेड इंफॉर्मेशन है, सपोज बैटरी लेवल इज लो और समथिंग, तो वो उसका इंटरनल स्टेट होगा। फिर हम लोगों ने देखा डिफरेंट टाइप ऑफ सेंसर, दैट आर स्विच सेंसर। इसमें भी थ्री टाइप्स हैं, कॉन्टैक्ट, लिमिटेड, शाफ्ट एनकोडर। और इसमें हम लोग मोस्टली बम्प स्विच का यूज करते हैं। वो क्या करता है, वो रोबोट को सेंस करता है कि कौन सा ऑब्स्टेकल्स कौन से पाथ पे है, ताकि उन दोनों का कोलिशंस ना हो। नेक्स्ट वन इज लाइट सेंसर। लाइट सेंसर का यूज क्या होता है, ताकि रोबोट इजीली सी कर सके, और वो लाइट इंटेंसिटी या उसमें जो भी रिडक्शन है वो उसको कैलकुलेट कर सके। ओके। और जब भी हम सेंसर्स को यूज करते हैं तो हमें कुछ पॉइंट्स को देखना पड़ता है, जैसे उस सेंसर टाइप कैसा है, उसकी सेंसिटिविटी कैसी है, वो एक्यूरेट है या नहीं, और कौन से पोजीशन पे हमें इसको यूज करना है। नेक्स्ट वन हम लोगों ने देखा एक्शन। सो व्हाट इज एक्शन? एक्शन में भी दो है, फर्स्ट वन इज इफेक्टर एंड द सेकंड वन इज एक्यूटेटर। इफेक्टर क्या है? इफेक्टर इज एनी डिवाइस दैट अफेक्ट्स द एनवायरनमेंट। ओके। मीन्स अगर कोई भी चीज डायरेक्टली इन्वायरमेंट के कांटेक्ट में आ रही है तो वो होता है इफेक्टर, दैट इज बेसिकली प्रेजेंट ऑन आर्म्स। और अगर वो कोई भी मैकेनिज्म फॉलो कर रही है तो वो होता है एक्यूटेटर। ओके। और ये हम लोग कहाँ यूज करते हैं? लोकोमोशन एंड मैनिपुलेशन में। लोकोमोशन का मतलब क्या होता है? टू मूव अराउंड। एंड मैनिपुलेशन का क्या मतलब होता है? टू हैंडल द ऑब्जेक्ट। ओके। तो इफेक्टर्स जैसे बताया, जो एक्शंस लेते हैं, जो फिजिकल थिंग परफॉर्म करते हैं। और अगर इफेक्टर्स कोई मैकेनिज्म फॉलो कर रहा है तो उसको हम लोग एक्चुएटर्स बोलते हैं। देयर आर टू मेजर सब फील्ड, वन वन फर्स्ट वन इज मोबाइल रोबोटिक्स एंड द सेकंड वन इज मैनिपुलेटर रोबोटिक्स। मोबाइल रोबोटिक्स मतलब जब रोबोट एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे मूव कर रहा है, अभी वो ग्राउंड भी हो सकता है, एयर भी हो सकता है, या अंडर वाटर भी हो सकता है। एंड मैनिपुलेटर रोबोटिक्स क्या होता है? जो कि बेसिकली आर्म से रिलेटेड कॉन्सेप्ट रहता है। ये स्टूडेंट, मैंने दोबारा से फॉर्म शेयर किया है। अगर किसी ने फॉर्म फिल नहीं किया है तो वो फिल कर सकता है। एंड वन मोर थिंग, कि कोई देवराज यादव को जानता है फ्रॉम SYBSC प्लेन? देवराज यादव। यस और नो? अगर कोई देवराज यादव को जानता है तो प्लीज उसको मैसेज पास कीजिए कि वो फॉर्म दोबारा फिल करे और वो अपना करंट रोल नंबर डाले, ना कि इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज का। उसने जो रोल नंबर डाला है फॉर्म में वो इमर्जिंग का डाला है, इमर्जिंग का यूज नहीं करना है। आपका जो खुद का रोल नंबर है जो आपको क्लास में मिला है वो आपको यूज करना है। मैंने मैंने अगेन फॉर्म का लिंक सेंड किया है। जिन बच्चों ने नहीं फिल किया है वो फिल कर सकते हैं। आपको आपका जो नेम है वो नेम फॉर्मेट, जैसे सर नेम, मिडिल नेम, लास्ट नेम, उसी में लेना है। रोल नंबर आपको कौन सा यूज करना है? जो कि आपका डिपार्टमेंटल रोल नंबर है, जो आपके आईडी पे लिखा है।
आपको स्ट्रीम क्या लिखना है। सपोज अगर आप प्लेन से हो तो आप FYBSc लिखोगे, अगर आप कंप्यूटर साइंस या IT से हो तो FYBSc या SYBSc, CS, IT, BCom ऐसे लिखोगे। SYBSc, FYBSc आपको इंक्लूड करना ही है। लास्ट थिंग, वहां पे आपको नंबर ऑफ असाइनमेंट्स भेजे हैं जिसमें 0, 1, 2 ऑप्शंस है। ओके, तो अगर आपको 2 असाइनमेंट अभी तक मिले हैं, अगर आपने दोनों सबमिट किए हैं तो आप दो सिलेक्ट 2 सिलेक्ट करोगे। अगर आपने एक सबमिट किया तो आप 1 सिलेक्ट करोगे, और अगर आपने एक भी सबमिट नहीं किया है तो आप 0 करोगे। जिन लोगों ने फॉर्म सबमिट कर दिया है उनके लिए ये नहीं है। जिन लोगों ने नहीं किया था मैंने उनके लिए दोबारा से शेयर किया है। यस देवराज, इफ पॉसिबल तो आप किसी और डिवाइस से लॉग इन करके अगर फॉर्म सबमिट कर सकते हो, कोई दूसरा ईमेल आईडी यूज करके, तो वो बेटर रहेगा। बिकॉज आपको इतना इंस्ट्रक्शन दिया था कि मर्जिंग टेक्नोलॉजीज का रोल नंबर नहीं यूज करना है, तो आपने क्यों यूज किया। जिन लोगों ने फॉर्म नहीं फिल किया है फर्स्ट टाइम में, ये उनके लिए है। और देवराज, अगर इफ पॉसिबल तो आप दूसरा ईमेल आईडी लॉग इन करके फॉर्म सबमिट करो। डाउट था तो आपको पूछना चाहिए था ना, काफी स्टूडेंट्स ने डाउट पूछा तो मैंने उनको क्लियर किया है। नाउ इफ पॉसिबल आप कोई दूसरा ईमेल आईडी लॉग इन करके फॉर्म सबमिट करो। एंड दोज हु आर, टुडे सेशन इज डन। जिनको कोई डाउट नहीं है और जिनका फॉर्म भी फिल करके हो गया, दे कैन लीव। विल मीट इन नेक्स्ट सेशन। थैंक यू सो मच, टेक केयर एवरीवन।